So today we'll start from where we left last time, and G Aman. Sir, I wanted to ask, last time we discussed pointers to functions. Can you give an example of where we would actually have to use it? Okay, so I'll just start from recap what we did last time. Primarily, we discussed about pointers, and we discussed that you can define pointers that could actually point to not just the whole class or the struct, but you can define pointers that point to the individual members of a class. And so you have data members and you have got the function members. So you can define separate functions, separate pointers that could point to each of these data members. Okay. And specifically, if you have got private members, then you can only access those private members through a function, and that function is basically a public function. So you can, if you are able to access that function from the main program through that function, and that function has to be part of a class definition, and that function has to be public. So that you can access that function through the main program. So using that public function, you can access any private data member or private function of a class. And in order to access that, either you can access that through reference, and that means that you can access through the memory, or you can access by value. And if you have an access, simple access through the dot operator, that would mean that that's actually an explicit call. That's not a call by reference or a call by pointer. So there are two ways of doing it. One we have already discussed earlier, and the other one is using the pointers. So you declare a pointer to a function, and then you can call that function using the pointer during the pointer notation, and that is either you can have the arrow notation or you can have the steric and dot notation together that we have discussed earlier. So accessing functions through pointers can actually be seen. You have already seen that in case of structs, you'll have exactly the same thing using the class. But here the difference is that if you have a public member, and that is either a data member or a function, you can define separate pointers to each of these data members. Okay? Rather than accessing them directly, you can actually, rather than accessing through an instance of a class, you can directly access them. Okay? By defining pointers. Okay, so let me just recap that example that we did last time. So here is a syntax for pointer declaration and initialization. So this pointer is pointing to a data member of class X, and that data member is A here. The class name is X, and this is the name of the pointer, etd etr. So this is the name of the pointer.
So this is a pointer declaration to a data member directly. You are not referring to any instance of a class here. So instance of a class, so for example capital X is the class here, right? And we haven't really declared any instance here. We are directly accessing the data member here through a pointer. And why is it possible? It's possible because this data member is public. Traditionally what we have been doing is that we have been declaring an instance of this class X, और फिर उस instance के through आप data members को access कर सकते हैं. But this representation here which I've just shown you, this representation do not require let's say in its definition and in its declaration any declaration of an instance of a class X. Though you cannot assign any value or you cannot like perform any function or any operation using this data member without declaring an instance. So in order to use it, you have to declare an instance, and we'll see that how this is actually done. Okay, so before we do that, you can also access the functions here, which are represented by this line here, which says that declare a pointer to a member function. So can you all hear me? Yes. Okay. Yes, sir. Okay. So this declaration, the second declaration here, is a bit of a complex sort of declaration and initialization. What is this doing? What is this saying? This is actually a pointer to a function of class X. Okay, and at present it's actually pointing to a function which is f, and this pointer, this function belongs to this class X here, and this is a standard say way of defining a pointer. So we have initially declared a pointer here. And now in order to use this function, you have to use it for some instance of a class. Okay, so for that you'll have to declare some instance and then use this pointer to point to A or to F, referring to that particular instance. Okay, so let's just see. So here we have defined an instance of a class which is X object. Right? So X object is an instance of a class X. And now using these definitions of the pointers, yes, yes, there is a comment here which says कि जी क्या ये pointer integer है? हाँ, इस definition पे अगर आप देखें, तो this pointer is pointing to an integer, so this is an integer, right? So function के case में primarily, हाँ, देखें मैं बात कर रहा था डेटा मेंबर की इस डेक्लेरेशन की, ठीक है? यहाँ पे ये जो डेक्लेरेशन है, इसमें इस ब्रैकेट के अंदर ये जो इंट लिखा हुआ है, दिस इज रिफरिंग टू द आर्गुमेंट. So whenever you are pointing to this function, you have to pass an argument, and this function is expecting an integer as an argument, right? Okay. Okay, so then this is PTR is the name of the function, is the name of the pointer. Okay, you can write any name you want. Okay, so यहाँ पे PTF is pointer to F, means pointer to F function, and PTR is basically representing that it's actually a pointer. Yes, Abdullah का ये है कि what do you do in case of two arguments for a function? In case of two arguments of a function, यहाँ पे इसी bracket के अंदर आपको
नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बताने हैं कि पहला आर्ग्यूमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इट वुड बी अ लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट, कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट। जैसे फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स जैसे पास करने हैं वैसे यहाँ पे आप ओके राइट। तो let's just move on. So अब this line here which I've just shown you on the slide, this is the instance of class X and this is the pointer that is being referred. And if you remember from the definition which is represented here in this line, this pointer is referring to a data member और यहाँ पे आप उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं. So you are putting a value of 10 to this particular value of you are assigning 10 to A through a pointer. Yes, I जी अब्दुल्ला आप ठीक कह रहे हैं. I couldn't do that, but I'll do it hopefully today. ये जो आप बात कर रहे हैं ना कोडिंग वीडियो की, I'll do it today. I'm sorry about that. जी. I'll just, I mean, the slide which I'm just showing you is an example of that. So the next thing would be the call to the function. So this is called to the data member, the pointer ptdr referring to this object, referring to A of this object. Okay? So you put a value of 10 to A that belongs to this instance X object. Okay. So next is the use of the function call. So this is the function being called through a already declared pointer ptf. So this is the object that we are referring to, or ये object is instance of a class X object, and ptf ptr is the pointer, and you all know that this pointer points to function f. So now it's referring to function f of X object with this argument which is 20. ठीक है, तो ये जो int b है, this is being referred here. ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन में जो int b यूज किया है, तो यहाँ पे अगर इसमें एक से ज्यादा आपके पास आर्गुमेंट्स आ जाते हैं तो then you will have to change it accordingly. ठीक है जी, as I told you that this is through this initialization of or call of the function is through pointers. आप directly भी कर सकते हैं without pointers. That is also possible. जो कि methods आपको पहले जो हैं वो हाँ इसमें देखें PTI actually PTI PTR जो है ना वो typo है, ठीक है, in this out. तो उसको मैंने उसको ठीक नहीं कर सका. Last time I also pointed out. So this is actually a point. This is actually PTD. Okay. So this is the main sort of a program. So when you run this program, you will see कि ये आपके पास A की value print होगी और फिर आप अगर आपकी B की value भी अगर आप print करवाना चाहें तो you can actually do that through the function call. तो B की value भी print हो रही है और A की value can pointers be used to point towards private class members if we use the scope resolution? अच्छा, scope resolution operator सिर्फ definition of the pointer में हम use कर रहे हैं. ये जो 4 आपके पास जो dots आ रहे हैं, this is primarily the scope resolution. ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये pointer किस class के instance को किस class को belong कर, ठीक है, और किस class के किस data member को belong कर. So if you are using this, तो आप इसको, because you are writing this program in your you are writing this line in your main program, ये जो int
ये जो line you are writing in your main program, therefore you can't really write it without the scope resolution operator. तो आपको scope resolution operators जो है ना वो इसमें डिफाइन करने पड़ेंगे, उसके बगैर आप नहीं लिख सकते. हाँ, अगर आप क्लास के अंदर ही उसको डिक्लेयर करते हैं तो देन दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. अच्छा, बिफोर आई मूव ऑन, फवाज आपका क्वेश्चन क्या है? हेलो. यस. सर ये लास्ट वाली लाइन वापस से समझा दें जो एक्स ऑब्जेक्ट स्टार पीटी एफपीटीआर 20 वाली है मेन के अंदर जो है. अच्छा, so this is called, this is primarily using the pointer to the function. ठीक है, जो आपने पहले डिक्लेयर किया. इफ यू लुक एट द सेकंड स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम, void x scope resolution static ptf ptr, तो यहाँ पे आपने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया जो कि f को रेफर कर रहा है. और ये जो लाइन अभी हमने लिखी है, दिस लाइन in the program that we have just written here, this line is simply calling this function f for an instance x object, and this instance x object is of class x, right? I hope this is clear. Yes, thank you, sir. Right ji. So right, so यहाँ पे you have just seen here कि there is this is a complex statement here, and this complex statement it's cumbersome to actually repeat this statement every time, especially these two statements. So what you can do is कि हम इसको एक definition के तौर पे अलग से लिख सकते हैं in the program, and then without writing this whole thing again and again, we can simply rename this, or is definition ko we can put a name to this definition, and then call these pointers using the name that we have defined. Acha, let's see how we can actually do that. Before we actually do that, how renaming can be done in case of C++. So type def जो है, that is actually is a keyword that is actually used to rename any given, say for example, keyword in C++ that already exists. ठीक है, and it inherits it inherits the properties of that keyword. For example, integer is int is a keyword, and you all know कि int किस लिए use होता है. It's actually used to declare an integer. I can rename it. I mean, I can say that int की जगह जो है ना मैं कुछ और use करना चाहता हूँ, कोई और नाम use करना चाहता हूँ. Similarly, float, you know that this keyword is used to declare a float, a data type. ठीक है. Similarly, string है, दूसरे जो keywords हैं, these keywords are being used in C++. But if I want to rename them, ठीक है, if I want to rename them, I can do that using this type def statement. So let's just see कि ये कैसे होता है. I'll just show you an example first, and then come back to this pointer thing again. ठीक है. So this is a syntax that you actually use this type def in your program. It's a very simple say syntax. The keyword type def comes first, followed by the type, that means followed by the keyword जो कि आपने जिसको आपने replace करना है, followed by the name, and this is the new name which is given to them. Okay. So let's see how this is actually used. So type def float amount. So this is a statement that you can write in your program. What is this statement doing? Type def is saying that I am giving a new name to float. I am giving a new name to float, and that new name is amount. Okay. So after I write this statement,
I can use amount in place of float anywhere in my program. ठीक है, कैसे? Just like this. तो इसके बाद मैंने स्टेटमेंट लिखी amount, loan, saving, installment. So it's very similar to saying कि loan, saving and installments are of type float. And instead of using this keyword float, I am using this word amount now. So amount becomes a reserve word now. So amount can be used anywhere in my program in place of float. ठीक है, तो ये जो दो लाइंस हैं ये क्या कर रही हैं, ये बेसिकली फ्लोट को रीनेम कर रही हैं. ठीक है, तो अब नया नाम फ्लोट का क्या है? अमाउंट. यू कैन ऑल्सो यूज फ्लोट, यू कैन ऑल्सो यूज अमाउंट. सो फ्लोट लोन भी लिखा जा सकता है, अमाउंट लोन भी लिखा जा सकता है, फ्लोट सेविंग भी लिखा जा सकता है, अमाउंट सेविंग भी लिखा जा सकता है, एंड फ्लोट इंस्टॉलमेंट भी लिखा जा सकता है, एंड अमाउंट इंस्टॉलमेंट भी. ठीक है, सो we have just given a new name to float, rename. Okay, though we can use float anywhere. इसका मतलब ये नहीं है कि आप float आगे use नहीं कर सकते. You can use float, but you can also use amount. So whenever I use amount, that would refer to a data type now, which is of type float. तो बिल्कुल ऐसी जैसे मैं float, loan, saving, installment कर सकता हूँ, इसी तरह से I can write down amount, loan, saving, installments. It's exactly the same. No difference. ठीक है. So float will not change, but instead of float, we have also introduced a new name, which is amount. Right? Achha. What is the definition of that? What's the benefit of that? So I'll just show you the benefit of that in a while. Right? So now let's say कि मैंने यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने I've just given a few definitions. So this is a declaration of a pointer that points to a data member. ठीक है, और इसके नीचे जो है that is a declaration, that is a pointer to a member function. So what is this? This is primarily this is primarily referring to so this is primarily referring to a new sort of a definition of a pointer. Okay, and this pointer is primarily referring to a data member, and this is referring to a function. So what I can do is that instead of writing down a pointer every time to a data member, I can define using type def in my program, right? Type def in a program and write down this generic statement and then use it. Okay, so let's see how this can be done. Okay, so let's come to this. Okay, so here let's just see how this is actually used. So here is the utility of type def. So what I've said is, okay, I have defined type def here. So just wait for a minute, please. I'll just share the screen in a while. Right. Okay. So let me just share this.
So here is the utility of type def. तो मैंने पहले क्या किया था, मैंने ये, if you look at this is very similar to the declaration जो कि मैंने पहले दी थी. पहले मैंने declaration के अंदर my pointer to member जो था ना, इसको मैंने लिख दिया था ptd ptr. ठीक है. Now I have given a new name to this, my pointer to member. ठीक है, आप इसे छोटा भी कर सकते हैं. I mean, just I've written this just so that you can understand what is happening here. So now what I can do is that if I want to define a pointer to any data member of the class, I can use this keyword my pointer to member, right? Instead of writing down that complete statement, जो कि पहले मैंने स्लाइड में आपको दिखाई, right? So what I'm saying here is कि, okay, what I'm saying is कि I've defined a new name using this keyword type def that is primarily a new name for this. ठीक है, इस पूरे statement की जगह I can use this new name, my pointer to member. Okay. If you see this slide with the previous slide, then you will find the difference. Okay. So this is for my pointer to a data member, and this is the type definition for my pointer to a function. Okay. My pointer to a function. So यहाँ पे the same type def is being used, and then a new name to the pointer is being assigned, and this is my pointer to the function. It's exactly the same thing, लेकिन क्योंकि मैंने अब type def use कर लिया, तो pointer का नाम जो है ना, that would always be used instead of that whole statement जो कि मैंने पहली slide में आपको दिया. Okay, let's see how to use it. So now simply if I want to use it, so instead of writing that initial part जिसमें int x scope resolution steric आ रहा था, instead of that I am actually using this new name, my pointer to data member, and the rest is the same. ठीक है, तो my pointer to data member would always declare a pointer pointing to a data member of a class. ठीक है. So similarly, instead of writing this statement every time, whenever I want to declare a pointer, I can simply write down my pointer to function or my pointer to member, and I can write down or I can generate these pointers on the run. ठीक है, तो simply मैंने क्या किया है, if you look at the previous definition here, what I've said is instead of writing down this thing every time, and instead of writing down this thing every time, I have type defined it. I've given it a name, a simple name. ठीक है, तो अगर आपको सिंटेक्स याद नहीं रहता, आपने एक दफ़ा सिर्फ अपने प्रोग्राम के अंदर टाइप डिफाइन करना है और फिर कोई कीवर्ड आप रख सकते हैं. यू कैन यूज दैट कीवर्ड टू डिफाइन द पॉइंटर. ठीक है, द रेस्ट इज एग्जैक्टली द सेम जैसे मैंने पहले आपको बताया. तो दिस इज द डेफिनेशन पार्ट विच कम्स आउटसाइड योर मेन प्रोग्राम. इट कुड कम इन योर ग्लोबल डिक्लेरेशन पार्ट जहाँ पे आपने टाइप डिफाइन किया, and then in your main program you can call it like you have just called my pointer to data member, and we have given it a name. Similarly, my pointer to function, we have given the name of that pointer and just initialized it. So initialization आपको करनी पड़ेगी. So this part is the initialization part. ये initialization आपको in any case करनी. So this initialization is not that difficult to understand. लेकिन इसका जो पहले वाला part था, ये वाला पार्ट और ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर जो आपने यहाँ पे लिखा है, इसकी जगह आप सिंपल कीवर्ड यूज कर सकते हैं जो कि माई पॉइंटर टू फंक्शन है. ठीक है, सो दिस वुड मेक लाइफ इजियर फॉर यू.
तो आपने कोई भी इस तरह से फंक्शनैलिटी अगर अगर आपने कोई इंट्रोड्यूस करवानी है तो आप टाइप डेफ यूज़ कर सकते हैं, टाइप डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं, यू कैन कास्ट इट इन अ वे। सो आपने एक कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन को उठाया, you have wrapped it in a new name and now you are using that new name in your book, ठीक है, जो भी आपने नाम रखा इस केस के अंदर, so that would make life easier for you and you don't have to actually remember this big syntax here every time in order to point a pointer to a data member or to a function, okay? So if you look at the left hand side of this of these statements, you will find that these left hand side are quite simple compared to यहाँ पे जो statements आपने लिखी है, ठीक है? So it has made your life relatively easier. This is what type definition is. I hope things are clear. Now let me go to the chat room and let's see. जी अच्छा, तो इसका क्वेश्चन था कि डज इट मीन दैट द टाइप डेफ इज ग्लोबल? यस, अगर आप उसको ग्लोबल डिक्लेरेशन में डालेंगे तो इट विल बिकम ग्लोबल, ठीक है? तो कहाँ पे आप उसको कर रहे हैं, दैट मीन्स के उसी के कॉन्टेक्स्ट में आएगा, जिस भी कॉन्टेक्स्ट। तो एट प्रेजेंट जिस तरह से मैंने डिक्लेयर किया, सो दिस बिकम्स ग्लोबल, आप मेन प्रोग्राम में उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, तो सो वी कुड ऑल्सो क्रिएट अ टाइप डेफ फॉर, नहीं ये नहीं आप कर सकते काइम, आप दिस इज नॉट समथिंग विच यू कैन डू। द रीजन फॉर दैट इज के दिस इज इन द इनिशियलाइजेशन फेज, ठीक है? राइट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट स्टेटमेंट आ रहा है %x, यू ऑलरेडी नो कि इसका मतलब क्या है, पास बाय रेफरेंस है, तो उसको आप सिंप्लीफाई और क्या सिंप्लीफाई करेंगे, एंड द रेस्ट इज द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। और स्कोप रेजोल्यूशन सिंपली ये बता रहा है कि आप किस ए को रेफर कर रहे हैं, यू आर रेफरिंग ए ऑफ क्लास एक्स, so that's what it is saying, it's already in a way simplified. So dividing those two different types, it doesn't divide the pointer, two different pointer types are defined, जी two different pointers have been defined in this particular case. एक वो है जो कि डेटा मेंबर को रेफर कर रहा है और एक वो है जो कि फंक्शन को रेफर कर रहा है, और मैंने किसी भी फंक्शन को रेफर करना है तो आई कैन यूज माई पॉइंटर टू फंक्शन एज कीवर्ड, उसके बाद पॉइंटर का नाम दूंगा, उसके बाद किस फंक्शन को मैंने रेफर करना है और किस क्लास के फंक्शन को रेफर करना है, आई कैन एक्चुअली डू दैट, ठीक है जी? एंड सेम इज द केस विद द डेटा मेंबर, तो हर डेटा मेंबर को करने की बजाय नाउ आई हैव यूज्ड अ कीवर्ड हियर। अच्छा जी, और क्या था जी क्वेश्चन? ये था टाइप डेफिनेशन और यूजिंग में, आई मीन इट्स you can also like put it in some other form। आप एक क्लास टेम्पलेट का हिस्सा बना सकते हैं और उसको अगर आप अलग से एक टेम्पलेट का हिस्सा बनाते हैं, then you will have to include it in your program, you can do this, लेकिन उसके लिए आपको एक अलग से क्लास कंप्लीट डेफिनेशन स्वीट जो है ना वो अलग से जनरेट करनी पड़ेगी। this is something which is instant that you can do in your own code। इसके लिए आपको अलग से जो है वो definitions जो हैं वो सॉरी मेन क्लास टेम्पलेट्स वगैरह या इस तरह से चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? when we are saying कि using namespace या using को जब आप कर रहे होते हैं, that actually refers to a different sort of context, ठीक है? वो इस तरह का कॉन्टेक्स्ट नहीं है, रीडेफिनेशन नहीं है, बेसिकली आप कर क्या रहे हैं कि आप उसकी क्लोन्स एक तरह से जनरेट कर रहे हैं। दिस इज नॉट व्हाट यू जनरली डू इन यूजिंग, ठीक है? तो वो उससे डिफरेंट है। जी अच्छा, अब्दुल्ला का था कि इन केस इट विल वर्क, ओके, सो somebody is trying to run it और उसको कुछ errors आ रहे हैं, so I don't know what type of errors you are actually getting, लेकिन I've actually run it and I don't see any problem here। I'll try to run it if it works, ठीक है? तो I don't think कि इसमें कुछ error आना चाहिए, अगर कोई आ रहा है तो you'll have to find out कि क्या
क्या हुआ error आ रहा है. अच्छा, anyway, so the rest is the same. I'll actually show it actually works. ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है. So I've already covered this part. अच्छा, for now we'll move on to another discussion, and this discussion is a very interesting discussion, and I think and at the same time this will be a little complex to understand, lekin I mean in terms of the syntax of it, but in terms of the concept it's not that difficult to understand, and that is the concept of overloading. अच्छा, overloading का जो concept है, we have already touched upon overloading a little bit जब हमने constructors की बात की थी या functions की बात की थी. तो function overloading का मतलब क्या है? So the name of the function is the same, लेकिन the number of arguments that are passing to that function, they are different. So therefore when you call a function, that tells you कि आपने किस function को call किया. Same is the case in case of constructors. If you know कि default constructors and parameterized constructors. Parameterized constructors कब call होते हैं? जब आप उन्हें explicit call देते हैं. ठीक है, तो एक function f है जिसका कोई argument नहीं, और एक और function f है जिसका एक argument है, और एक और function f है जिसके दो arguments. तो अब इन तीनों में से कौन सा function आप call करेंगे, that would depend upon कि आपने कितने arguments pass किए. If you are calling a function without passing an argument, तो वो पहले वाला फंक्शन कॉल होगा जिसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं होगा. सो इफ यू आर कॉलिंग अ फंक्शन f with one argument, so the second function with one argument will be called. ठीक है, so overloading will mean that the name of the function is exactly the same, but the functions that the functionality of each of the respective function is different. The same concept is used here when we are studying operator overloading. Achha, operator. So first, don't be overwhelmed by the syntax of this. Let's first understand what is this operator overloading mean. Achha, what is the meaning of operator overloading? Let me just give you an example. ठीक है, एक आपके पास, and we are talking about operators here. For example, plus is an operator. This minus is an operator. ठीक है, multiplication symbol is an operator here. So similarly you have slash is an operator here, right? So these are the different types of operators that are being used. So what is plus doing? Plus is used to add two numbers. ठीक है, अगर आपके पास a plus b अगर आप करते हैं तो what would that mean? That would mean that the value of a is added, the value of a and b are added together. That is what this plus operator would mean, right? Similarly, this minus operator what would this mean? The minus operator means that you are actually subtracting the two values. ठीक है जी. Okay, so what would operator overloading mean? Operator overloading would mean that now instead of the meaning of this plus will change. That's what operator overloading would mean. So let's just take an example and try to understand this. So for example, I have got a box here, और इसकी ये dimension जो है वो a है, और इसकी ये dimension जो है वो b है. ठीक है, I've got another box here. ठीक है, इसकी ये dimension c है और इसकी ये dimension d है. Let me call this box as b1, capital B1, and let me call this box as capital B. Okay, so you can see this. Yes, sir. Okay, so let's say that these are two boxes, B1 and B2. ठीक है, now in simple terms क्या होता है? Plus क्या करता है? Plus ये करता है कि you can say that A plus C आप कर सकते हैं.
a प्लस बी कर सकते हैं, d प्लस बी कर सकते हैं, तो टू नंबर्स आर बीइंग एडेड एंड दैट इज अ सिंपल थिंग जो कि एडिशन हो रही होती है, एंड फॉर दैट यू यूज एन ऑपरेटर विच इज द प्लस ऑपरेटर. अच्छा, व्हाट इफ आई वांट के the plus operation in case of these two boxes should be such कि इन दोनों बॉक्सेस में को जब मैं ऐड करूं, जब मैं ये स्टेटमेंट लिखूं b1 प्लस b2, ठीक है. तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप ईच डेटा एलिमेंट को ऐड नहीं कर रहे. व्हाट आई एम सेइंग इज कि मैंने टू ऑब्जेक्ट्स को ऐड किया. तो b1 इज वन ऑब्जेक्ट विच इज अ बॉक्स, b2 is another object which is again a box, and I am saying add b1 and b2, capital B1 and capital B2, and by that what I mean is when I'm saying add b1 to b2, this means b1 का a b2 की c में add हो. I mean that is what my definition of adding these two is. Okay, and I've come up with this definition based on the problem which I'm trying to solve. और जब मैं b1 प्लस b2 करूं तो इसका मतलब ये होगा कि a और c ऐड हो जाएं, b और d ऐड हो जाएं, and I should get, as a result of this addition, I should get another box which is b3 with again these dimensions. और ये dimensions क्या होंगी कि यहाँ पे a और c ऐड हो रहा होगा, ठीक है. So this would be a plus c, this would be the height of this box, and the width of this box would be b plus d. This is the width of the box. और ये मेरे पास b3, ठीक है. अब आप देखें कि सिंपल ये जो प्लस ऑपरेटर मैंने यहाँ पे यूज किया है, इसकी डेफिनेशन चेंज होगी. द सिंबल हैज नॉट चेंज्ड, लेकिन द डेफिनेशन हैज चेंज्ड, राइट. सो व्हाट इज द न्यू डेफिनेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट of this plus operator? The new sorry, I lost the connection, right? I lost the connection, so abhi jo hai, I just joined in back. Let me just start from where left. बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है. थैंक यू. अच्छा, तो let me just come back to that discussion again. Okay, so I was just telling you okay, the definition of that addition has actually changed. Now the new definition which I've actually proposed is कि जब मेरे पास दो objects हों b1 and b2, तो what I want is कि जब मैं दोनों objects को add करूं तो उनकी respective dimensions जो है ना वो add हो जाए, ठीक है. So यहाँ पे उनकी respective dimensions add होंगी और I'll get a new box, ठीक है, which would have a larger dimension, ठीक है. तो उनकी जो दोनों की जो लेंथ्स हैं, ये दोनों लेंथ्स ऐड हो जाएं और मेरे पास नई लेंथ आ जाए विच इज़ दिस, और दोनों की विड्थ ऐड हो जाए और मेरे पास नई विड्थ आ जाए विच इज़ दिस, ठीक है. एंड दिस इज़ नॉट द स्टैंडर्ड वे जिसमें ये प्लस ऑपरेटर इज़ यूज्ड, ठीक है. प्लस ऑपरेटर जब भी आप यूज़ करते हैं, आप दो लाइक डायमेंशंस को ऐड कर देते हैं, ए और सी को ऐड करते हैं, या लेकिन जब मैं इसका कॉन्टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, जब मैं ये कहता हूँ कि अच्छा अब मेरे केस में प्लस का मतलब ये नहीं होना चाहिए, मेरे केस में प्लस का मतलब ये होना चाहिए कि वो कुछ और करे, रादर फ्रॉम हट के करे अपने ट्रेडिशनल ऑपरेशन से,
तो जब मैं दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करता हूँ तो उसका मतलब मेरे ख्याल में ये होना चाहिए कि अगर वो बॉक्सेस हैं तो उनकी लेंथ्स ऐड हो जाएं और उनकी विड्थ्स ऐड हो जाएं और मेरे पास एक नया बॉक्स आ जाए, एंड ऑल ऑफ दीज थ्री ऑब्जेक्ट्स बिलोंग टू द सेम क्लास, राइट। ये क्विज किधर से आ गया? अरे तो जी, तो आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट्स से कि इसी तरह से मैं कहता हूँ कि जी अच्छा मैं एक नया ऑपरेटर डिफाइन करना चाहता हूँ माइनस, और माइनस का मतलब ये होना चाहिए, क्या मतलब होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए कि दोनों की लेंथ सब्ट्रैक्ट हो और मेरे पास एक नया ऑब्जेक्ट आ जाए जो कि एक छोटा ऑब्जेक्ट हो उसके पास, और जिसकी लेंथ जो होगी, हाइट जो होगी वो दोनों की हाइट का डिफरेंस होगी, और विड्थ जो होगी वो दोनों की विड्थ का डिफरेंस होगी, ठीक है। सिमिलरली मैं कहता हूँ कि जी अच्छा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये होना चाहिए कि दोनों की रिस्पेक्टिव डायमेंशंस मल्टीप्लाई हो जाएं और मेरे पास एक नया ऑब्जेक्ट। एंड नाउ यू कैन सी कि अब जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, दो द सिंबल्स आर सेम, but these operations are different from the normal operation. नॉर्मल एडिशन ऑपरेटर से डिफरेंटली ये ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। इज दिस थिंग क्लियर? अच्छा, अब ये तो मैंने सोच लिया, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये करना कैसे, होगा कैसे, हाउ कैन दिस बी डन? Shiza, this is where the answer to your question comes. How can this be done? This can be done by defining a statement that overloads the operator. इसको हम कहते हैं operator overloading. So I'll have to explicitly define कि मेरे केस के अंदर जब मैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कोई ऑपरेटर अप्लाई करता हूँ, what is the meaning of that operator, ठीक है। तो प्लस की मीनिंग को मुझे चेंज करना होगा, एंड फॉर दैट आई हैव टू राइट डाउन सम explicit statements, right? I'll have to write down some explicit statements. Okay, I write down some explicit statements for that. और जहां पे ये जो अब आपको सिंटेक्स नजर आ रहा है, ये वाला, this syntax is being followed, ठीक है। Though it would seem a little complex, लेकिन I'll just show you the working of that, and first you understand the working of that, and then you can dig deep into this syntax कि ये syntax actually है क्या, ठीक है। Okay, so let me just show you how is it actually working, ठीक है। Let me straight away go to an example, ठीक है, और उस एग्जाम्पल में हम इसको देखते हैं कि ये कैसे ये करता है। So I've just given you this example of boxes. Let me try to write a small code that is actually performing the same thing जो कि मैंने अभी आपको बताई है। Okay, so let's just start with this. Okay, so this is a small piece of code. अभी मैंने एक class define कर दी, box, right? So what is this class box doing? इस क्लास के अंदर जो है वो एक फंक्शन है which is get volume. This would calculate the volume and give you the value of the volume. फिर एक फंक्शन है जो कि उसकी लेंथ को सेट करता है, फिर एक फंक्शन है जो उस बॉक्स की ब्रेथ को सेट करता है, फिर एक फंक्शन है जो उस बॉक्स की हाइट को सेट करता है। तो ये चार फंक्शन है इसके अंदर, right? And then here what we have defined is that we have defined some data members. Yeah. So length is a data member, breadth is a data member, height is a data member, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली आप अच्छा इस पे बाद में आते हैं कि ये इनकी प्लेसिंग क्या है। आई लीव इट टू यू फॉर अ व्हाइल। अच्छा, तो ये आपके पास प्राइमरीली क्लास डेफिनेशन के कुछ हिस्से आ गए। अच्छा, अब मैंने क्या करना है कि अब मैंने ऑपरेटर ओवरलोडिंग करनी है, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग में आपने क्या करना है। अच्छा, probably this code will be little
difficult if you don't really know कि ये this pointer क्या है और ये syntax क्या है. But let's say कि I've I've written this. I'll explain this कि ये है क्या in a while. But just take it as it is. That this is the code that is being written here. And what is this code doing? This code is redefining what? The plus operator. ठीक है, we'll come to each and every line of this code in a while. लेकिन ये क्या कर रहा है? ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहा है. ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब क्या है कि ये प्लस की डेफिनेशन को चेंज कर रहा है. प्लस की डेफिनेशन को चेंज का मतलब क्या है कि ये दो लेंथ्स को ऐड कर रहा है. यहाँ पे ये दो ब्रेथ्स ऐड हो रही हैं और यहाँ पे ये दो हाइट्स ऐड हो रही हैं. एंड दे आर बीइंग स्टोर्ड इन अ न्यू ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स. ठीक है, और वो जो नया ऑब्जेक्ट वेरिएबल है दैट इज ऑफ टाइप बॉक्स, जो कि मैंने ऊपर डिफाइन कर. ठीक है जी, ओके. सो वील कम टू दिस पॉइंट कि ये कैसे हमने किया एंड व्हाट इज दिस थिंग हियर. दिस जो यहाँ पे हमने कीवर्ड यूज किया है ये क्या है. वील कम टू दिस इन अ व्हाइल, बट फॉर अ व्हाइल जस्ट अज्यूम कि ये डेफिनेशन आपने कर दी है अपने प्रोग्राम के अंदर. ठीक है, नाउ कैसे किया है वील कम टू दैट. लेकिन लेट्स सी कि इसमें होना क्या चाहिए. इसमें होना ये चाहिए कि अब मैं मेन प्रोग्राम में आ गया. मेन प्रोग्राम में मैंने क्या किया है, एक इंस्टेंस डिफाइन किया है बॉक्स 1 और एक इंस्टेंस मैंने डिफाइन कर दिया बॉक्स 2. अब यहाँ पे एक और इंस्टेंस मैंने डिफाइन कर दिया बॉक्स 3. और अब स्पेसिफिकेशंस ऑफ बॉक्स 1 मैंने ऐड कर दी. उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट उसकी मैंने सेट कर दी. बॉक्स 2 की स्पेसिफिकेशंस आ गई, लेंथ ब्रेथ और हाइट सेटर फंक्शंस को कॉल करके. और अब मैं बॉक्स 1 का वॉल्यूम निकाल रहा हूँ, बॉक्स 2 का वॉल्यूम निकाल रहा हूँ. और नाउ कम्स द रियल पार्ट. अब मैंने बॉक्स 3 निकालना है, which has just told you कि जिसमें बॉक्स 1 और बॉक्स 2 की एडिशन होगी. I'll simply write down बॉक्स 3 और उसके आगे मैंने बॉक्स 1 और बॉक्स 2 को ऐड कर दिया. राइट, as I told you, I'll come to this coding part कि ये कैसे हो रहा है. But first just understand कि ये यहाँ पे हो क्या रहा है. ठीक है, तो बॉक्स 3 is box 1 plus box 2. So what should happen according to this definition? According to this definition, what should happen कि box 1 की length box 2 की length add हो, box 3 की box 1 और box 2 की breadth add हो जाए और box 1 और box 2 की height add हो जाए. This is what this should actually do. So if I've coded it correctly, this will happen, and then I can calculate the volume of the box, which is box 3 का volume. And I can display it, and this is what you will get at the output. बॉक्स 1 का वॉल्यूम ये है, बॉक्स 2 का वॉल्यूम ये है, बॉक्स 3 का वॉल्यूम ये है. राइट, लेट मी जस्ट शो यू. Okay, let me just show you the coded bit here. Yeah. Before I go to this part, there was अभी एक क्वेश्चन था. Anyway, so okay, so here is the operator overloading code, the same thing that I've just shown you. I hope you can see this. So what has been done here, यहाँ पे I'll start from the top. Some statements have been added, included here. यहाँ पे वो definition आ जाती है of the functions. These are public functions. फिर definition आ गई of
the operator overloading part, I'll explain that later on. फिर private members की declaration है, and then this is the main code here. Box 1, box 2, box 3 generated 3 instances, उनकी values को set किया है using the setter function of the 2 boxes, calculated the volume for box 1, calculated the volume for box 3, box 2, and now I have added the 2 boxes. Ji Zain, I'll don't worry, I'll talk about this keyword in a while. ठीक है, ये अभी मैंने explain नहीं किया, just bear with me for a while. ठीक है, I'll just explain that. I'll explain it in what. अच्छा, box 3 is simple addition of box 1 and box 2, and what is this doing according to the definition of addition that I just told you. उनकी respective breadths add होंगी, उनकी respective widths add होंगी, उनकी respective lengths add होंगी. ठीक है, and if you run this code, you will see कि ये आपको कुछ output generate करके देगा. The type of output which I've just shown you, hopefully this would run. इसमें कोई मसला होना नहीं चाहिए. Yes, so you got the output, which is volume of box 1, volume of box 2, and volume of box 3. और यहाँ पे आपने देखा कि what we have done is that we have changed the definition of plus here. So plus अगर objects के दरमियान यूज हो रहा होगा, अगर 2 objects की addition हो रही होगी, तो this is what will happen. But अगर this won't mean कि आगे कोड के अंदर मैं अगर प्लस करता हूं तो that would change the definition of plus. ठीक है, नॉर्मल प्लस अपनी जगह पे कायम रहे. जैसे 2 इंटीजर्स मैं डिफाइन कर देता हूँ, इंटीजर a एंड इंटीजर b, और उनको मैं ऐड कर देता हूँ, और यूजिंग दिस प्लस ऑपरेशन उस पे ये डेफिनेशन लागू नहीं होगी. ठीक है, ये डेफिनेशन उसी वक्त लागू होगी when I'll be using this plus operator between 2 instances or between 2 objects of class box. Right? सिंपल एडिशन भी अपनी जगह पे रहेगी, लेकिन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एडिशन जब होगी तो वो ये मेरी नई डेफिनेशन को फॉलो. राइट, सो दिस विल नॉट रिप्लेस, दिस वुड ऐड. सो ये ओवरलोडिंग हो रही है ऑफ प्लस. ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट्स में प्लस यूज हो रहा होगा तो दिस विल हैपन, जो कि मैंने अभी कोट किया. और जब सिंपल वैल्यूज के दरमियान आप यूज कर रहे होंगे, then the definition of plus would be the normal definition जो कि normally होती है. ठीक है जी, जो आपने बात की यूसुफ, बिल्कुल ठीक है, आप ये कर सकते हैं. आप एक फंक्शन लिख लें जो कि ये काम करे और फंक्शन कॉल कर लें. आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्यों कर रहे हैं? ठीक है, आसानी के लिए कर रहे हैं. ठीक है, और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी आप स्टैंडर्ड न्यूटेशंस यूज कर सकते हैं, जो कि प्लस माइनस और भी इसके रीजंस हैं. यू कैन एक्चुअली गो इनटू दोज रीजंस आल्सो. ठीक है, बट दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक जगह पे प्लस यूज कर रहे हैं उसका मतलब फ़र्क है, दूसरी जगह पे प्लस यूज कर रहे हैं उसका मतलब फ़र्क है. अगर आप तीसरी जगह प्लस यूज कर रहे होंगे उसका मतलब जो है वो. ठीक है, सो क्लास स्पेसिफिक आप उसको कर सकते हैं. जी, इट्स ऑलवेज बेटर अब्दुल मुईज़, इट्स ऑलवेज बेटर कि आप जो है वो यूज करें प्राइवेट का कीवर्ड. इट्स ऑलवेज बेटर. सर, आपने यहाँ पर जो प्लस किया है बॉक्स 1 और बॉक्स 2 को, इसकी तो डेफिनेशन अलग हो गई ना कि वो लेंथ को ऐड करे, ब्रेथ को ऐड करे. लेकिन व्हाट इफ आई डोंट वांट टू डू दैट और मुझे दूसरी तरीके से एडिशन करनी है जो नॉर्मल होती है, तो
तो अगर मैं जो है वो इंट के बाहर अगर ये मेन के बाहर अगर जो है वो मैं ये ऑपरेशन ओवरलोडिंग कर दूंगी तो फिर जब मैं दोबारा इंट के अंदर जब मैं प्लस करूंगी तो वो तो वही फॉलो करेगा या फिर वो दूसरा वाला भी फॉलो कर वो दूसरा फॉलो करेगा जो नॉर्मल ऑपरेशन, ठीक है। दिस ऑपरेशन वुड ऑलवेज बी फॉलोड जब मैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास बॉक्स के लिए प्लस यूज कर रहा हूँ, ठीक है राइट। थैंक यू सो दैट नॉर्मल विल नॉट गो अवे, ठीक है, दैट नॉर्मल विल ऑलवेज बी देयर, ठीक है, उसमें मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होना चाहिए। अच्छा ये लिखा हुआ है कैन यू शो कोड अबव द बॉक्स ऑपरेटर पार्ट। अच्छा बॉक्स ऑपरेटर पार्ट, so this is the code above the box operator part, ठीक है, सिंपल फंक्शंस है। अच्छा let me just give you an insight to this कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। अच्छा देखें, let me come to this this part of the code जिसमें box 1 plus box 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जब भी ऑपरेटर ओवरलोडिंग की हम बात कर रहे होते हैं या फंक्शन कॉल्स की बात कर रहे होते हैं, there are two things that you need to know and that you need to remember, ठीक है। and of course we'll have a detailed discussion about this hopefully next time। ऑपरेटर ओवरलोडिंग या फंक्शन कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जो है, any object invokes the operator that is being overloaded here। invokes का मतलब ये है, it's just like a function call कि आपने एक argument है, one is the argument that is passed to the function, right? The second thing is the return value, and the third thing is कि where is that return value going, right? So if you look at this statement, so box 1 plus box 2, I'll just show it on the slide ताकि उसको ज़्यादा आसानी से आप समझ सकें। I'll just show it on the slide, ठीक है, and I'll just maybe here I'll just write down the thing again। So here we have got, let's say, box 1 plus box 2, ठीक है। So let's just focus on this। Okay, so what is this doing? So here we have an operator which is plus, this has been overloaded, box 2 and box 1, ठीक है। So according to the definition जो कि मैंने box के अंदर, box के जो operator overloading में जो definition मैंने दी है उसके मुताबिक box 1 would always, because it comes before this operator overloading, so box 1 is always the invoking object। We'll say that this object will invoke this overloaded operator, ठीक है। So box 1 is the object that invokes this overloading, ठीक है, और ये invoke कर रहा है on box 2। So box 2 will be considered as the argument and box 1 will be considered as the invoking object। ये चीज clear होनी चाहिए। Whatever comes first is the object that invokes this operation, and whatever comes after is considered as an argument to that invoked operator, ठीक है। Okay, so plus is the operator overloaded operator, box 1 is invoking this, I mean it's actually initiating this overloading, or box 2
जो है that is a sort of an argument that has that passes through that. Okay, so इस चीज को आपने जहन में रखना है, and keeping this thing in mind, let's come to this part here. Wait. Okay. So जो भी ऑब्जेक्ट इन्वोक कर रहा होगा, जो भी ऑब्जेक्ट इन्वोक कर रहा है, एन ऑपरेटर, ठीक है, दिस कीवर्ड is a pointer that points to that invoking object. ठीक है, तो this length would mean कि this is a pointer, this keyword, ये जो this word this है, is referring to the invoking object. That means कि अगर box 1 plus box 2 मैंने किया है, तो this will point to the length of box 1, right, जो कि invoking object है, right, plus b dot length. B dot length क्या है? B dot length is referring to the object that comes after this operator plus, which is box 2 according to this definition. ठीक है, according to this यहाँ पे b dot length जो कि कोड में लिखा गया है is referring to the length of this object box 2, and this arrow length would refer to the length of box 1. ठीक है जी. So by default, this keyword this always refer to the invoking object, right? Not to the argument, but to the invoking object. Okay, so the invoking object in case of this plus operator is the object that comes before the plus operator. ठीक है, right? I hope this is clear. Acha, I'll just reshare this. I'll just stop sharing and I'll just reshare this. Now is it okay? Okay. So this is an important concept here, right? So aapne, if I refer to the definition of the operator overloading part, which is this one here. Yes, this one here. Yeah. So just focus on this particular bit. ये जो overloading definition वाला part, this part. Okay. So here you have the operator plus. That is the syntax that is being used. इससे पहले क्या आप expect कर रहे हैं? इससे पहले आप एक object of type box expect कर रहे हैं, और इसके बाद आप क्या expect कर रहे हैं? इसके बाद भी आप एक object of type box expect कर रहे हैं, और दरमियान में you have this operator plus. This is the syntax. ठीक है? b dot length जो है, that would always refer to the object that comes after the operator. B dot length. This length would always refer to the object that comes before the plus operator. ठीक है? The object that comes before the plus operator is called the invoking object.
ठीक है. So the keyword this here would always refer to box 1 क्योंकि box 1 plus box 2 आपने लिखा. And what is box 2? That comes later after the operator, after this symbol of the operator. ठीक है. So therefore this part here would always refer to the first object that comes before the operator, and this part here would refer to the breadth of the box that comes after the operator, which is written after the operator. ठीक है. So if you go to the code here, you can see कि यहाँ पे ऑपरेटर को इन्वॉक जो है वो बॉक्स 1 ने किया है, और किस पे इन्वोक हुआ है? बॉक्स 2 पे. तो दिस बॉक्स 2 would be this part. Box 1 would be always referred using this pointer. Okay, so this is the simple say explanation to this pointer. We'll have a detailed discussion next time, but keeping this in mind, you can understand कि ये यहाँ पे जो है वो हो क्या रहा, right? So there are two things. इक्वालिटी के एक तरफ बॉक्स 1 और बॉक्स 2 की लेंथ्स को ऐड हो रही हैं, और पहले बॉक्स 1 आएगा क्योंकि दैट्स द इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट, और बाद में बॉक्स 2 आएगा बिकॉज दैट इज कंसिडर्ड टू बी एन आर्गुमेंट ऑफ दिस प्लस ऑपरेटर. और ये सारी की सारी जो एडिशन के बाद रिटर्न किधर हो रही हैं, द कोड एक्चुअली टेल्स दिस कि ये भी एक बॉक्स ऑब्जेक्ट में रिटर्न हो रही है. ठीक है. सो ये सारी एडिशन के बाद भी एक बॉक्स ऑब्जेक्ट जनरेट हो. ओके. So anyway, I'll leave it here for now. We'll discuss this in detail next time, and we'll not rush through this, right? We'll go through some further details so that you are comfortable with this. It's not easy to understand it just by say having it in our first lecture, unless you practice it, and unless the operator overloading thing is exercised, and you'll probably not be able to understand this instantly. Okay? It will take some time, so don't need to you don't need to worry about this thing. Okay? If you are not able to understand this right now, don't worry. We'll actually discuss this with some further details so that the concept is actually clear. ठीक है जी. अब कुछ yes, I'll do the coding video inshallah. वो है मेरे पास. I was not able to upload that. I'll do the coding video again, and I'll upload that. ठीक है जी. Of course we'll not be going to this very advanced concept straight away. Unless you are comfortable with this, unless you understand this clearly, we'll not hold a lab on this. अगर होगी भी तो that would be just a practice lab, ताकि you practice this thing. जी फाद. Sir, I wanted to ask कि एक क्लास की डेफिनेशन में हम लोग एक डेटा मेंबर को भी वही क्लास असाइन कर सकते हैं, या फिर इवन एक फंक्शन का भी रिटर्न टाइप, मतलब कि सपोज बॉक्स है तो मतलब बॉक्स के अंदर हम एक डेटा मेंबर भी रखें जो इटसेल्फ बॉक्स ही हो, या फिर एक फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप भी बॉक्स ही हो. हाँ बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ये किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है. रिटर्न टाइप बॉक्स हो. अब जैसे देखें ना, अब क्लासेस के ये दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ डिफाइनिंग क्लासेस के आप यू कैन ट्रीट क्लास एज अ नॉर्मल डेटा टाइप. ठीक है. नॉर्मल डेटा रिटर्न फंक्शन की रिटर्न एक नॉर्मल डेटा टाइप भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है. इसी तरह रिटर्न फंक्शन का एक रिटर्न जो है वो क्लास भी हो सकता है. ठीक है. जैसे मतलब डेटा मेंबर्स को आप ऐड करते हैं, इसी तरह आप क्लास के ऑब्जेक्ट्स को भी ऐड कर सकते हैं. लेकिन सर वो मतलब क्लास के अगर अंदर ही डिफाइंड है तो अभी क्लास प्रॉपर्ली मतलब
फंक्शनल नहीं हुई लेकिन फिर भी हो जाता है ऐसे, मतलब अगर वो फंक्शन क्लास के अंदर ही एक मेंबर फंक्शन ही है लेकिन वही उसकी रिटर्न टाइप भी वो क्लास ही है, मैं ये पूछ रहा हूँ। आप फंक्शन की बात कर रहे हैं? फंक्शन मेंबर फंक्शन हो, मतलब वो उसी मेंबर क्लास का फंक्शन, मेंबर हाँ फंक्शन हो, बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है। वो भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, जैसे आपने पहले भी किया, मेरा ख्याल है पहले किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर लेट्स से, मैंने शायद पहले एक एग्जांपल दिया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर आप ऐड करते हैं तो रिटर्न टाइप भी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपने वो जो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है वो तो क्लास के अंदर ही डिफाइन किया। जी जी दैट्स पॉसिबल। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी ईशा। Sir, you just mentioned कि अगर इसके बारे में lab होगी, that would be a practice I lab. can't hear you, please. If you But sir, आपने अभी mention किया कि अगर इसके ऊपर lab होगी तो it would be a practice lab, right? जी 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 So a practice lab isn't graded or जी उसमें सिर्फ I mean we'll not like rigorously test you on this. We'll just give you some practice questions. आप उसको करें। हाँ उसकी obviously if it is only a practice lab or again उसकी भी submission तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, just to ensure कि आपने वो काम किया, ठीक है। हाँ और अभी तो we have just started this. I'm not say really keen on giving it in the lab straight away unless you practice it a lot, ठीक है, and then we can actually do it, ठीक है। तो होपफुली जो अगली लैब होगी उसके अंदर हम शायद ऑपरेटर ओवरलोडिंग तक ना, ठीक है जी। इज देयर एनीथिंग एल्स? The contents of the next lab would obviously you'll have some practice on classes. उसमें हम हो सकता है टाइप डेफिनेशन, टाइप डेफ उसमें ऐड करते हैं और इसी तरह से कुछ और चीज़ें ऐड करते हैं, लेकिन ऑपरेटर ओवरलोडिंग अभी हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। ओके जी।